नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखंडे अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। सनत्कुमारवाच। ततो हिरण्याक्षसुता कदाचित्संक्षावितो नर्मयुतेर्मदान्धे तैर्भातृभिः सम्प्रयुतो विहारे किं मन्दराज्येन तवाधिकारेऽयम्। हिरण्यनेत्रस्तु बभूव मूढाकिलीप्रियं नेत्रविहीनमेव यो लब्धवांस्तवां विकृतं विरूपं घोरैस्तपोभिर्गिरीशं प्रसाद सत्वं न भागी खलु राजकस्य किमन्यजातोऽपि लभेत राज्यं विहार्यतं तदेव नूनं वयं तु तदागिन्न एव सत्यम्। सनत्कुमारवाच। तेषां तु वाक्यानि निशम्य तानि विचार्य वधूच्च स्वयमेव दीना तान् शान्तयित्वा विविधैर्वचोभिर्तत्स्तवरण्यनिशि निर्जनं तु वर्षायुतं तत्र तपक्षार जापयं विधर्तैकपाद आहारहीनो नियमो धर्वबाहुः कर्तुं न शक्यं हि सुरासुरैर्यज्रजबाल्यवह्निं संजुहोति गात्रमासं सरक्तं खलु वर्षमात्रं तीक्ष्णेन शस्त्रेण निकृत्य देहात् समन्त्रकं प्रयत्यहमेव हुत्वा सनायवसच्छेषं कुपं तदा सोक्षयं गतं शोणितमेव सर्वं यदास्यमासानि न सन्ति तेऽहं प्रक्षेप्तु कामस्तु हुताशनाय तथा सदृष्टिस्त्रिदशालयैर्जने सुव्यस्तिमैस्तैर्भिरतीयते समस्ते अथामरे शीघ्रतरं प्रसादितो बभूव धातानुतिभिर्नुतो हि निवारयित्वाथ पितामहस्तं उवाच त्वं याचादवरं वृणीषव यस्यापतिकामस्त्व सर्वलोकेषु दुर्लभं दानव तं गृहाण सपद्यो नेस्तु वचो निशम्य प्रोवाच दीना प्रणतस्तु दैत्ययुनिष्ठुरैर्मे प्रहृतं तु राज्यं प्रहाद मुख्या मम सन्तु भृत्या अन्धस्य दिव्यं हि तथास्तु चक्षुरिन्द्रादयो मे करदा भवन्तु मृत्युस्तु माभून्मम देवदैत्यगन्धर्वैश्चोरगमानुषेभ्यो नारायणाद्वादितिजेन्द्रशत्रो सर्वाजनात् सर्वमायाच शर्वात् श्रुत्वा वचस्तस्य सुदारुण तत्सुशङ्कितपद्भ्यभवस्तमः ब्रह्मोवाच। दैत्येन्द्र सर्वं भविता तदेतद्विनाशहेतुं च गृहाण किंचित् यस्मान् जातो न जन्येष्ठते वा यो न प्रविष्टो मुक्मन्तकस्य अत्यन्तदीर्घं खलु जीवितं तु भवादृशा सत्पुरुषा सत्यजन्तु एतत्त्वच सानुन्यं निशम्य पितामहत् प्राह पुनः स दैत्य अन्धक उवाच। कालत्रयाक्ष भवन्ति नार्य श्रेष्ठाक्ष मध्याक्ष तथा कनिष्ठा तासां च मध्ये खलु रत्नभूता ममापि नित्यं जननीव काचित् कायेन वाचा मनसाप्यगम्या नारी नृलोकस्य च दुर्लभाया तां कामयानस्य ममास्तु नाशो दैत्येन्द्र भावाद्वगन्स्वम्भूवाक्यं तदा कर्ण्य सपद्ययोनि सुविस्मृत शङ्करपादपद्यं सस्मार सम्प्राप्य निदेशमाशु शम्भोस्तु त्वं प्राहं ततोऽन्धकं वै ब्रह्मवाच। यत्काण्डशस्य दैत्यवरांस्तु ते वै सर्वं भवत्येव वचा सकामम् उत्तिष्ठ दैत्येन्द्र लभस्व कामं सदैव वीरैस्तु कुरुष्व युद्धं श्रुत्वा तदेतद्वचनं मुनीश विधातुराशु प्रणिपत्य भक्त्या लोकेश्वरं हाटकनेत्रपुत्र सनायवस्थिशेषस्तु तमादेवम् अन्धकवाच। कथं विभो वैरि बलं प्रविश्य हानेन देहेन करोमि युद्धं सन्याव्यस्ते
शेषं कुरु मास पुष्टं करेण पुण्येन च मास प्रसाद। सनत्कुमारवाच श्रुत्वा वचस्तस्य सपद्ययोनिकरेण संस्पृश्य च तच्छरीरं गता सुरेन्द्रसहित स्वधाम सम्पूज्यमानो मुनिसिन्धसङ्घे संस्पृष्टमात्र स च दैत्यराज सम्पूर्णदेहो बलवान् बभूव स जातर्नेत्र सुभगो बभूव हृष्टस्वमेवं नगरं विवेश उत्सृज्य राज्यं सकलं च तस्मै प्रह्लादमुख्यास्त्वत् दानवेन्द्र तमागतं लभत्वरं च मत्वा भृत्वा बभूवुर्षगास्तु तस्य ततो अन्धका सर्व स्वर्गमगादिजेतुं सेनाभियुक्तं सभृत्य वर्गविजित्य देवान् प्रधन्ये स्मस्तान् करप्रदं वज्रधरं चकार नागान् सुपर्णावर राक्षांसक्ष गन्धर्वर्यक्षानपि मानुषांस्तु गिरीन्द्रवृक्षान् समरेषु सर्वक्षतुष्पदासन्मुखान् विजिज्ञ त्रैलोक्यमेतिद्धि चराचरं वैवश्यं चकारात्मनि सनियोजय ततोऽनुकूलानि सुदर्शनानि नारीसहस्राणि बहूनि गत्वा रसातले चैव तथा धरायां त्रिविष्टपेया प्रमदासुरूपा ताभिर्युतो न येषु स पर्वतेषु रराम रमेषु नदी तेषु क्रीडायामान् स तु मध्यवर्ती तासां प्रहर्षाद दानवेन्द्र तत्पीतशिष्टानि पिबन् प्रवृत्ते दिव्यानि पेयानि सुमानुषानि अन्यानि दिव्यानि तु यद्रसानि फलानि पुष्पानि सुगन्धवती वन्ति सम्प्राप्य यानानि सुवाहनानि मयेन सृष्टानि गृहोत्तमानि पुष्पार्घधूपान् विलेपनैक्ष सुशोभितानयुद्धदर्शनैक्ष संक्रीडमानस्य गतानि तस्य वर्षायुतानि ह तथा नथ कस्य जानाति किञ्चिन्न शम्भुपरत्र यदात्मना सौख्यकरं भवेदि सदान्धको दैत्यवरासमूढो मदान्धबुद्धिकृत्तुष्टसङ्गा तथा प्रमत्तस्तु सुतान् प्रधाना न कुतर्कवादैरभिभूय सर्वान् चचार दैत्यसहितो महात्मा विनाशन्यवैदिक सर्वधर्मान् वेदान् द्विजान्वितमदाभिभूतो न मन्यते समाप्य मरान् गुरुक्षं रेमे तथा देवगतो हतायुस्वस्थैर्होभिर्गमन्ययक्ष तथा कदाचित् दत्तवानस्य सैन्यो बहुप्रयाता पृथ्वीपतले सिमन अनेकसङ्ख्यया अपि वर्षकोटचा प्रहर्षितमन्दरपर्वतं तु सर्वोपममा तत्र निरीक्ष्य शोभां बभ्राम सैन्ये सह मान्मता क्रीडार्थमासाद्य च तरं गिरीन्द्रं मतिसवासाय चकार मोहात् शुभं दृढतत्रं पुरं स कृत्वा मुदा स्थितो दैत्यपतिप्रभावात् निवेशामास पुनः क्रमेण अत्युद्धतं मन्दरशैलसानो दुर्योधनो वैधशहितसिद्धसंज्ञो तन्मन्त्रिणो दानवत्तमस्य ते वै कदाचिद्धिरेत्सुस्थले हि नारीसुरूपान् ददृशुस्त्रोऽपि ते शीघ्रगता दैत्यवरास्तु हर्षादद्रुतं महादैत्यपतिं समेत्य ऊचुर्यथा दृष्टं तीव प्रतीया तथा अन्धकं वीरवरं हि सर्वे मन्त्रिणो च ऊचु गुहान्तरे ध्यानमीलिक्षताशो दैत्येन्द्र कक्षिन्न मुनिरत्र दृष्टरूपान्वितचन्द्रकलातरचूड कटिस्थलबद्ध गजेन्द्र कृति नागेन्द्र भोगावृत सर्वगात्र कपाल मालाभरणो जटाल सशूलहस्त शर्तून
धारी महाधुन्नश्मान् विधृताक्ष सूत्र खड्गी त्रिशूली लकुटी कर्पदी चतुर्भुजो गौरतराकृत्रिः भस्मानुलिप्तो विलसत्सु तेजासत्भविश्वर्यो दूत सर्ववेश तस्या विदूरे पुरुष दृष्ट स वानरो घोरमुखाकराल सर्वायुधारूक्ष करक्ष रक्षन् सिद्धो जरदो वृषभक्ष शुक्ला तस्योपविष्टस्य तपस्विनोऽपि सुचारुरूपा तरुणी मनोज्ञा नारी शुभा पार्श्वगता हि तस्य दृष्टा च काचिदुवीरत्नभूता प्रबालमुक्ता मणिहेमरत्न वस्त्रावृता माल्य शुभोपगूढा स येन दृष्टा स च दृष्टिमानस्यात् दृष्टेन चान्येन किमत्र कार्यं मान्या महेशस्य च दिव्यनारी भार्या मुने पुण्यवत्त प्रिया सा योग्या हि दृष्टुं भवत्तक्षसम्य गानाय दैत्येन्द्रसुरत्नभोक्तु सनत्कुमारवाच श्रुवेति तेषां वचनानि तानि कामातुरो भ्रूर्नित्य सर्वगात्र विसर्जयामास मुने सकांश दुर्योधनादीन् स दैत्य आसाद्य ते तं मुनिं प्रमेयं हृद्रवतं मन्त्रीवराहि तस्य सुराजनिति प्रवना मुनीश प्रणम्य तं दैत्यनिदेशमाहु मन्त्रिणुच ऊचु हिरण्येत्रस्य सुतो महात्मा दैत्याधिराजोऽन्ध कनामधेय त्रैलोक्यनाथो भवकृन्निदेशाधिपो वैष्टिभ्य विहारशाली तमन्त्रिणो वैभय मङ्गवीरास्त गोपकण्ठं च समागता सम्मतप्रेषितास्त्वं यदुवाच तद्वेषिणुष्व सन्दत्तमानस्तपस्विन् त्वं कस्य पुत्रोऽसि किमर्थमत्र सुखोपविष्टो मुनिवर्य धीमन् कस्येयमीदृक्तरूणी सुरूपा देया शब्दा दैत्यपतेर्मुनीन्द्र कवेदं शरीरं तव भस्मदिग्धं कपालमालाभरणं विरूपं तूणीरसत्कारमुखबाणखड्गभू शुण्डीशूलाशन्यतोमराणि कजानवी पुण्यत्मा जगट्टाग्रे कायं शशिवाकुण्पास्थितखण्डमा विशानलो दीर्घमुखकसर्पक्वसङ्गमपीनपयोधराया जर्द्वारोहन् प्रशसतं क्षमावत्तस्तस्य न दर्शनं च सन्ध्याप्रणामं कचिदेशधर्म क्व भोजनं लोकविरुद्धमेतत् प्रयच्छ नारीं मम सान्तवपूर्वं स्त्रिया तपं किकुरुषे विमूढ अयुक्मेतव्य नानुरूपं यस्मादहं रत्नपति स्त्रीलोके विमुञ्च शस्त्राणि मयाध चोक्ता कुरुष्व पक्षातप एव शुद्धम् उल्लङ्घ्य मच्छासन् मप्रध्यशं विमोक्षसे सर्वमित्थं शरीरं मत्वान्धकं दुष्टमतिप्रधानो महेश्वरो लौकिकभावशीला प्रोवाच दैत्यं स्मित पूर्वमेवामेवमाकर्ण्य सर्वं त्वथ दूतवाक्यं शिववाच यदस्मि रुद्रस्त्व किं मया सयात किमर्थमेवं वदसीति मिथ्या शिनु प्रभावं मम दैत्यनाथ न्यायं न वक्तुं वचनं त्वयैवं नाहं क्वचित् स्वं पितरं स्मरामि गुहान्तरे घोरमनन्यचिनर्नम् एतद्रवत्तं पाशुपतं चरामि न मातरं त्वज्ञत्मो विरूपा अमूलमेतन्मे तु प्रसिद्धं सुतस्य च सर्वमिदं ममास्ति भायार्ममेयं तरुणी सुरूपा सर्वं सहा सर्वगतस्य सिद्धि तर्हि यद्यदृचितं त्वास्ति गृहाण तदे खलु राक्षसत्वम् एतावदुक्त्वा विराम शम्भुस्तपस्येष पुरुस्तस्तु तेषां सनत्कुमारवाच गम्भीरमेतद्वचनं निश्मते दानवास्तं प्रणिपत्य मूर्धना
जग्मुस्ततो दैत्यवरस्य सूनु त्रैलोक्यनाशाय कृतप्रतियज्ञम् बभाषीरे दैत्यपतिं प्रमतं प्रणम्य राजानामदीनसत्त्वा ते तत्र सर्वे जयशब्दपूर्वं रुद्रेण यतस्मित्पूर्वमुक्तं मन्त्रीन् ऊचु निशाचर शञ्चल शौर्यधैर्य दानवकर्पीन सत्त्वहीन क्रूर कृत्रघन्नक्ष सदैव पापी दानव सूर्यसूतादिभेति राजसत्त्वमुक्तोऽखिल दैत्यनाथस्त्वपस्विना तन्मुनिना विहस्य मत्वा स्वबुद्ध्या त्रिन्वत्त्रिलोकं महोजसा वीरवरेण नूनं काहं च शस्त्राणि च दारुणानि मृत्योक्षसन्त्रासकरं कयुधं कवीरको वानरवक्त्रतुल्यो निशाचरो जर्षा जर्जाराङ्गं कवायं स्वरूपं क्व च मन्दभाग्यो बलं तदीयं क्व च विरुधो वा शक्तोऽपि चेत्त्वं प्रयतस्व युद्धं कर्तुं तदाहो विकुरुष्व किञ्चित् वज्राशने स्तुल्यमिहास्ति शस्त्रं भवादृशं नाशकरं च घोरं तते शरीरम् उद्युपत्य तुल्यं विचार्य चैवं कुरु रोचते यत्त इत्येवमादीनि वचासि तेन तपस्विन् नोक्तानि च दानवेशयुक्तं न ते तेन सहात्र युद्धं त्वमाहारजानः संयमान एव विवस्तु शून्यैर्भूभिप्रलापैरस्माभिरुक्तैर्यदि बुध्यसे त्वं तपोभियुक्तेन तपस्विना वै स्मर्तासि पक्षानुमुनिवाक्यमेतत् सनत्कुमारवाच तथा स तेषां वचनं निशम्य जज्बालरोषेण स मन्दबुद्धि आज्यावासक्तिस्थित्वव कृष्णवर्तमा सत्यं हितं तत् कुटिलं तु तीक्ष्णं गृहीतखड्गो वर्धमानमता प्रचण्डवातानो कृतिं च कुर्वन् गन्तु च तत्र स्मरबाणविध्वसमुद्यस्तो बुद्धिपरीतदेव इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पञ्चमे युद्धखण्डे अन्धदानपत्यपदलाभोपाख्याने दूतसंवादो नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः।